बराबर है, पर मशीन को कैसे समझेगा कि ग्राफ हम क्या फीड करना चाहते हैं? हम मशीन को कैसे बताएंगे ग्राफ कैसे फीड कर रहे हैं? तो हमने एक तरीका क्या देखा, एडजेंसी मैट्रिक्स। अब हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं, एडजेंसी लिस्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडजेंसी लिस्ट। नाउ एडजेंसी मैट्रिक्स क्या था बेटा? हमने कहा कि हमको n बाई n का मैट्रिक्स चाहिए था। n बाई n का मैट्रिक्स मतलब n रोज n कॉलम वेयर n वाज नंबर ऑफ वर्टेक्स। करेक्ट। इसका मतलब मेरा ग्राफ बहुत ही स्टैटिक होना चाहिए। अगर मैं नंबर ऑफ वर्टेक्स रन टाइम इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, देन दैट विल नॉट वर्क। करेक्ट है कि नहीं? अगर मेरा वर्टेक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमने पढ़ा एडजेंसी मैट्रिक्स वो नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि वो तो एरे है, उसमें रन टाइम हम रोज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो दूसरा एक तरीका है, अगर हमको ऐसा करना है तो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट। सो एडजेसेंसी लिस्ट मीन्स व्हाट? हियर the graph is stored as array of list. It is stored as array of list. When I say list, I am talking about linked list. Here the array contains vertex that refers to a linked list that contains all its adjacent vertex. Yes, मतलब क्या? मतलब ये सपोज मेरा ग्राफ है बेटा, कंसीडर, लेट मी ड्रॉ इट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। लेट मी ड्रॉ इट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। Now, directed graph means every edge will have direction associated with it. So let us say A, B, C and D. 1, 2, 3, 4 and 5. तो चलो ये मेरे एजेस हैं, ठीक है। अब मुझे अगर एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है तो आपको पता है क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट 4x4 मैट्रिक्स। लेकिन एडजेंसी लिस्ट क्या करता है? फर्स्ट यू क्रिएट एन एरे, लेट दिस बी एन एरे, लेट दिस बी एन एरे। इसका साइज क्या है? जितने वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये एरे में दो पार्ट रहेगा, एक तो वर्टेक्स और दूसरा एक पॉइंटर नेक्स्ट। यहाँ एक वर्टेक्स होगा और एक पॉइंटर स्टार्ट होगा ना। मतलब क्या है? ए का एडजेसेंट कौन कौन है बेटा? ए का एडजेसेंट कौन है बताइए? किसका सर? ए का बी और सी एंड डी ऑल्सो ना बेटा? हाँ यस सर। तो देयर ये स्टार्ट से एक रेफरेंस जाएगा दैट विल पॉइंट टू अ लिंक लिस्ट दैट कंटेन्स बी सी एंड डी। इसका मतलब सी, it is an array of vertex. It is an array of vertex, and this array contains a pointer pointing to a linked list that will have all the adjacent node of A. It can be in any order. पहले D लिख सकते हो, फिर C लिख सकते हो, फिर B लिख सकते हो. That is not important. What is important is, कि there is a pointer that starts from A and it points to a linked list that contains all adjacent node of A.
नाउ बी का एडजेसेंट कौन कौन है? कोई नहीं है। चलो एक काम करते बना देते हैं। नाउ बी का एडजेसेंट सी है खाली, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड ग्राफ। यस सर। सी का एडजेसेंट कौन है? ओनली डी। डी का एडजेसेंट कौन है? ओनली बी। Now this is for directed graph. This is for directed graph. अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा बेटा तो कैसे होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने ए बी सी डी ऐसे लिखा, and there is no direction associated with, तो अब क्या होगा? ए बी सी डी, ये तो हम जानते ही हैं, ये वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है और यहां से स्टार्ट है। नो, ए का एडजेसेंट कौन कौन है बताइए? बी सी डी। यस सर। So there will be a linked list B, C and D. B का adjacent कौन है? A, C, D, because undirected है बेटा। तो A, मैंने कहा ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में आप A, C, D लिख सकते हैं, बट A, C, D होना चाहिए। देन C का adjacent कौन है? A, C, D। D का सर adjacent, ए बी डी ना? C का adjacent A B D, sorry, A B B, it is not C, A B D, and D का adjacent is A C B. So I hope you got it how to represent it using urgency list. Got it? Now, Yes. you know, one beauty of it is, suppose you remove vertex D. So all I'm supposed to do is from this urgency list, I just have to remove every occurrence of D. That's it. That might take some time, but at least it is feasible here, na beta. Once you create an array, then you cannot remove it. Got it? Okay. So that is what urgency matrix urgency list. So if I want to write a program, and I want to represent a graph in my program, how to represent it? We have two ways: urgency matrix and urgency list. Now for your syllabus, whenever we will be writing program on this, we will be using urgency matrix only. And how to read urgency matrix, that we have seen in the function that we studied in the last lecture. Agreed? Yes sir. Now we are going to talk about graph traversal. We are going to talk about graph traversal. Now, what is graph traversal? Suppose you are given a graph, and what you do is you are visiting every vertex of graph exactly once. You are visiting every vertex of graph exactly one time, only once. That is what is graph traversal. That's it, simply. मैं ग्राफ का हर वर्टेक्स सिर्फ एक बार विजिट करूंगा, इसको हम कहते हैं ग्राफ ट्रावर्सल. नाउ अब इसमें टाइप, when I talk about graph traversal, we have two types. We have depth first search, and we have breadth first search. BFS traversal and BFS
एस ट्रावर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मुझसे पूछे कि एग्जाम में ये दो में से एक पक्का आएगा बेटा, 100% चांस है कि ये दो में से एक पक्का आएगा ग्राफ में, और उनके पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्राफ डिटेल में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वहां और डिटेल में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? Now, before we talk about depth, मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोई थियरी लिखूंगा तो तुमको समझेगा नहीं। पहले काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर ग्राफ। A, B, ठीक है। Suppose this is graph, undirected graph. Consider a graph. It is undirected. I need to perform depth first search traversal. Perform depth first search traversal. Now, first देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम एक एरे बनाएंगे जिसका नाम विजिटेड देंगे, विजिटेड, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Initially all zero matlab none of the vertex are visited. So the name of this array is visited, and this is my stack. This is my stack. So one thing is for sure, when I am performing depth first traversal, we will use stack. Agreed? Any confusion? Yes. Chalo. You beta, when it comes to traversal, you may start with any vertex. You may start with any vertex. Okay, you may start with any vertex. Okay, let us start with A. I have, what I'm supposed to do is I'm supposed to perform depth first traversal. Means I am supposed to visit every vertex exactly once. Correct? There are mechanism to vertex. There are visit vertex. There are different ways to visit the vertex, and that's what we will be talking about. So basically, na beta, it depends on which data structure are we going to use. When we say depth first traversal, we will be using stack data structure. Stack data structure का मतलब recursion होगा कि नहीं? Yes, because if I am talking about stack, it is implemented using recursion na beta. I mean, sorry, recursion is implemented using stack na. We have seen this. And breadth first traversal, it uses queue data structure. Okay, at least this is for sure. Is it clear? Yes, sir. Now, listen. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ। हमने कहा you may start with any vertex. पहला, please everyone concentrate. Let us start with vertex A. Let us start with vertex A. ठीक है, काम करो, push vertex A in stack and mark
it visited. So I have pushed vertex A in stack. Marked it visited means I made it 1. So now visited array में जाऊंगा और जब मेरे को ये चेक करना है कि वर्टेक्स A visited है कि नहीं, तो मैं जब visited में A का एंट्री देखता हूँ, now it is 1 means it is visited. Yes, sir. क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन ना? अब अच्छा, अब आउटपुट, हाँ ये मेरा आउटपुट भी मैं लिखते रहूंगा यहाँ पे, आउटपुट जो पहला पुश हुआ वो आउटपुट में, तो A इज इन आउटपुट. नाउ सेकेंड, अब देखो, नाउ पॉप A, नहीं वी विल नॉट पॉप, वेट. अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आपको हमने A को क्या कर दिया बेटा, विजिटेड कर दिया है. Yes or no? Yes, sir. We will pop only on certain condition. Let us see. तो अभी मैंने कहा ना A अंदर है, A को वर्टेक्स में, A को स्टैक में पुश किया, उसको विजिटेड मार्क कर दिया, विजिटेड में A 1 दिख रहा है. नाउ लिसन हियर. अब हम क्या करेंगे, A का एडजेसेंट कौन है? A का एडजेसेंट कौन? B, E and D, यही तीन पॉसिबल है. A का एडजेसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट A का एडजेसेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट A का एडजेसेंट कौन है? B, D और E, यही तीन में से पॉसिबल है ना बेटा? हेलो, am I not audible? हेलो निखिल, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर, आ रहा है तुम सर. लोग चुप हो गए तो मेरे को लगा आवाज ही नहीं आ रहा है. मेरे वो मशीन में कुछ तो प्रॉब्लम ही चल रहा है, पता नहीं क्या. What happened? What happened? क्या हो गया? कंटेंट किधर गया भाई? Let me start one note again. हाँ देखो क्या जमाना आ गया. ओके, नाउ प्लीज ध्यान दो. A का एडजेसेंट कौन है? A का एडजेसेंट है B, E and D, ये तीन में से एक है. मैं किसी एक को देखूंगा ना, किसी कोई भी एक एडजेसेंट पकड़ो आप. पुश unvisited adjacent node of A, anyone in stack, and mark it visited. समझा क्या बोल रहा हूँ? A का कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट, A का कितने एडजेसेंट है? 3. B, E, D, तीनों ही अनविजिटेड है क्योंकि तीनों ही 0 है. अनविजिटेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनविजिटेड एडजेसेंट नोड ऑफ A, कोई भी A, स्टैक में पुश करो, मार्क विज करो. लेट्स से B, हम B को पुश करते हैं क्योंकि B is one of the unvisited adjacent node. So we will push B in the stack and we will mark it visited. आउटपुट में B. समझा क्या? Yes, sir. नाउ तीसरा. अब स्टैक टॉप पे कौन है?
B ना, stack top देखने का B है ना. Now push anyone unvisited adjacent node of B जो stack top पे है in stack and mark it visited. B का adjacent कौन है? B का adjacent A है, but A visited है ना बेटा? Can you see this? Yes, sir. So we will not consider it. B का adjacent EB है, unvisited है, we can consider it. B का adjacent CB है, unvisited है, we can consider it. तो कोई भी एक consider कर सकते हैं C या E में से. Let us say C. Even E is right, huh? That is absolutely not a problem. So now C is here and C is marked visited. Agreed? Agreed? Yes, sir. Now, fourth. अब स्टैक टॉप पे कौन है बताओ? C है. Push anyone unvisited adjacent vertex of C and mark it visited. C का unvisited adjacent कौन है? C का adjacent पहले देखो कौन है? It is B, it is E, it is G. But B is already visited, should not be considered. So we are left with only two options, E or G. Yes? Yes, sir. You may select any one of it. You may, अच्छा अपना आंसर A के बाद B के बाद C आया था ना? You may select any one of it. Let's say E. So E is here on the stack. E is marked visited. Now stack top पे कौन है? E. Push anyone unvisited adjacent vertex of E and mark it visited. अभी E का देखो. E का adjacent कौन है? E का adjacent D, A, B, C, F. इतने लोग हैं कि नहीं? E का Yes. adjacent D, A, B, C, F. But A, B, C are visited, so they should not be considered. We are left with only two options, D or F. You may select any one of it. Let us select D. D. So stack top पे आया D and D is marked visited. I hope everything is going fine with you all. Yes, sir. Now I will let you know why I'm calling it as depth first. Now stack top पे D है. Push anyone unvisited adjacent vertex of D and mark it visited. D का adjacent कौन है? A and E, but दोनों visited है बेटा. Yes, sir. So now we do not have unvisited adjacent of D here, correct? No unvisited adjacent vertex of D is available. Unvisited. So pop D from stack. जिसका unvisited adjacent है उसको pop करो. So now D is no longer there. Agreed? Agreed? Yes, sir. Yes. So now what is stack top? Now who is stack top? E. E.
आप मेरे स्टैक टॉप पे ई है ना बेटा, अगेन वी विल चेक पुश एनी वन। आप बोलोगे सर ई का तो हमने किया था ना, बट ई का वो जरूरी नहीं कि वही हो। पुश एनी वन अनविजिटेड adjacent vertex of E। E का E के पास वापस आओ। E के adjacent कितने हैं? D A B C F। उसमें से D A B C तो visited है, बचा कौन? सिर्फ F बचा है, तो we will push any one unvisited adjacent vertex of E and mark it visited। I hope you are getting it। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा F, ठीक है, डी वाले स्पेस में ही आएगा ना, एंड मार्केट विजिटेड। नेक्स्ट, अब स्टैक टॉप पे कौन है? F ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो नाउ पुश anyone unvisited adjacent vertex of F and mark it visited। F का unvisited adjacent सिर्फ एक बचा बेटा। E and G are two adjacent, but E is visited. Now we will place G and mark it visited। Now every vertex is visited now। Yes, sir. 10 at stack top we have G। Now तो अभी बेटा अब G का अनविजिटेड एडजेसेंट देखेंगे, बट वो तो कोई है ही नहीं, तो पॉप हो जाएगा। नाउ समझ गया मेरा कहने का मतलब क्या है? नो अनविजिटेड adjacent of G is available, so pop G। G पॉप करेंगे तो क्या बचेगा बोलो? F. G पॉप करेंगे तो कौन बचेगा? F। अच्छा F, G पॉप किया F, इसका कोई अनविजिटेड एडजेसेंट बचा नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, तो धीरे धीरे करके सारे पॉप हो जाएंगे। Yes, sir. एंड सिमिलरली, समझ रहा है ना? Yes. All these stack elements are popped, and at the end stack is empty। Agree? देखो जरा, C के बाद कौन आया था? C के बाद E आया था, E के बाद D आया था, D के बाद F आया था, F के बाद G आया था। यही था ना बेटा मेरा? Yes, sir. Now I hope everyone understood this, how it is working। Yes? Yes, sir. I want you to write, just see, just write this question: find DFS of the given graph and write it fast। Find DFS of the given graph and write it।
Just let me know when to scroll. Is it done, beta? Hello. यस सर. सर हुआ नहीं. ओके ओके लिखिए. सी एक बात समझिएगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च ना यूनिक नहीं हो सकता है बेटा कभी भी. क्यों? मैंने जब ए का एडजेसेंट लिया तो मैंने बी लिया, कोई डी लेगा कोई ई लेगा, तो उसका ट्रावर्सल का सीक्वेंस ही अलग आ जाएगा ना बेटा. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल ऑफ अ ग्राफ may not be unique. Just understand this. सर स्क्रॉल कीजिए ना.
You got it? Yes. Okay. Now, जैसे मैंने कहा ना बेटा, it depends. It's not necessary you will get, everyone will get same depth first search. It depends upon the sequence of the vertex that you select while visiting. जैसे मैंने कहा ना, A के बहुत सारे हैं. I selected B, you may select D, फिर आपके एक नया sequence generate होगा. That is fine. Okay. Now, अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो बताइएगा, अगर मैं यहां से सीक्वेंस देखूं, ए के बाद मैंने पहले ए के बाद क्या विजिट किया बोलो, बी, बी के बाद क्या विजिट किया, सी, बी से सी विजिट किया ना बेटा, सी के बाद ए, ई, हाँ, ई, सी के बाद ई विजिट किया, फिर ई के ई बाद से डी, डी, फिर ई से एफ, फिर ई से एफ विजिट किया, परफेक्ट, फिर एफ से जी. Now can you see this? This is my original graph. This is my original graph. And don't you think this is subgraph of the original graph? This is subgraph. Now in this subgraph, all the vertex are there. All the vertex of original graph are there. All the edges are not there. But there is no cycle. Is there any cycle? Can you start from a vertex and reach to that vertex again? No, sir. No. So there is पहला इसका खास बात क्या है? All vertex of original graph. It has all vertex of original graph. Second, not necessary all edges. But there are no new edges, huh? The edges are from the original graph only. You cannot add new edge, huh? And third, no cycle. This subgraph is known as spanning tree. What do we call it as? Spanning. So when I go for depth first traversal, what I get is a spanning tree of the graph. So can I write here DFS produces spanning tree for given graph? Yes or no? And we know what is spanning tree. It is subgraph of graph that has all the vertex of original graph, not necessarily all edges, but no cycle. Clear? Yes, sir. And it uses, जैसे मैंने कहा, it uses which data structure? अच्छा, tell me what could be the maximum size of the stack here? What could be the maximum size of the stack? Number of vertex. Worst case. So maximum size of stack can be n, where n is number of vertex in graph. I hope everybody got it. Yes, sir. So can we write Can we write DFS step now? Now you understood it. So now I'm in a position to write depth first search traversal step. DFS steps. Can I? Yes, sir. Point number 1. Define a stack of size as, we will see one line at a time. Total number of vertex. So we will define a stack whose size will be same as total number of vertex. Everyone agreed?
Yes, sir. Step number 2, create an array visited of size same as number of vertex and initialize it with 0. Clear? Yes ना? कोई पता कैसे चलेगा अनविजिटेड है? इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, फिर देखेंगे. Now select any vertex as starting point. It's not necessary you have to start with A. You may start with any vertex. Select any vertex as starting point. अगर आपको एग्जाम में देंगे ना बेटा, तो they will tell you start from this vertex. You got it? They will specify start from this vertex. Select any vertex as starting point. Mark it visited and push the vertex in stack. Next. अब क्या करना है? Visit any one of unvisited adjacent vertex of top of stack. समझ रहा है ना बेटा? Top of the stack is very important. We have seen that. जो भी top of the stack पे है उसका कोई एक unvisited adjacent vertex को visit करो. Mark it visited and push it in stack. ठीक है? Fifth, when no new vertex to visit for the top of the stack. समझा? जो भी टॉप ऑफ द स्टैक पे है, अगर उससे हम कोई भी नए वर्टेक्स पे नहीं जा सकते, when no new vertex to visit, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक पर है उससे हम नए वर्टेक्स पे नहीं जा सकते हैं, मतलब सारे विजिटेड हो गए हैं. समझा? Yes, sir. Then pop the vertex at top of stack. Now इसके बाद जो भी है, मतलब अब हम क्या करेंगे? स्टेप 4 को वापस रिपीट करेंगे ना? हेलो? Yes, sir. Yes. एक काम करते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको लेट अस मेक 5 हियर. क्यों? क्योंकि अब हमने कहा कि उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करेंगे. देन वी विल से रिपीट स्टेप 4 रिपीट करते रहो until there is no new vertex to be visited for top of the stack. और अब अगर कोई नहीं है तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप करने का. तो वी विल से रिपीट स्टेप 4, 5 and 6. कब तक करना है बेटा? स्टैक एम्प्टी हो जाएगा ना? until stack becomes empty. When stack is empty, समझ रहे हैं ना आप लोग को? Yes, sir. When stack is empty, then produce
final spanning tree by removing unused edges from graph. इसका मतलब क्या है? रिमूविंग अनयूज्ड एजेस. जैसे बेटा ये मैंने स्पैनिंग ट्री बनाया है, ए ई एज हमने यूज नहीं किया था तो वी हैव रिमूव्ड इट, ए डी भी हमने यूज नहीं किया तो वी हैव रिमूव्ड इट, सी जी हमने यूज नहीं किया तो वी हैव रिमूव्ड इट. गॉट इट? Yes, sir. Okay. So and this is what is the answer. I hope depth first search एकदम clear है. Yes. Now आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं, मतलब व्हाई द नेम डेप्थ फर्स्ट. बेटा इसको डेप्थ फर्स्ट क्यों बोलते हैं मालूम है? सुनो जरा. कंसिडर ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफ मेरा. let me tell you what is the difference between depth first and breadth first, and then we will see the program on depth first. Now when you say depth first का मतलब select any one adjacent vertex and visit it. This is point number 1. Point number 2, repeat step 1. इसका मतलब क्या होता है बेटा जरा समझ लो. डेप्थ फर्स्ट मतलब ए का बी, देखो ए का एडजेसेंट कोई भी अब समझो मैं रैंडम विजिट करने जा रहा हूँ डेप्थ फर्स्ट, ध्यान देना. ए का एडजेसेंट बी ई डी है, कोई भी एक विजिट कर लो. मैंने डी विजिट कर लिया, डी. अब डी का देखो ए के 3 एडजेसेंट है, ए बी ई डी. मैं तीनों खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एक पकड़ रहा हूं. तो ए का एडजेसेंट डी, डी का ई का एफ, एफ का जी, जी का सी, सी का बी. इवन दिस इज आंसर है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं देखूं तो मैं ना बेटा यहां से चालू करके डेप्थ में जा रहा हूं. देखो ए से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी. I am starting here, I am going to the depth, and once I reach the depth, I am backtracking it back. समझा? अच्छा ये हो गया डेप्थ फर्स्ट. ब्रेथ फर्स्ट क्या बोलता है? ब्रेथ फर्स्ट visit all the adjacent vertex of a given vertex and then move to other vertex. Now what do you mean by that? दोनों में फर्क बताता हूं आपको. I mean हम obviously प्रोग्राम करेंगे, बट देन अपने को एक विजुअलाइज होना चाहिए कि भाई फर्क, क्योंकि आपको एक्चुअली उतना सारा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है. आप ऐसे बैठे बैठे डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च निकाल सकते हैं. डी ई एफ एन जी. BFS देखो, you start from A. A के सारे एडजेसेंट को विजिट करो पहले. तो A के बाद क्या आना चाहिए? B D E. समझा? Yes, sir. अब उसके बाद कोई भी एक पकड़ लो, B पकड़ लो. B के सारे एडजेसेंट को खत्म करो. B के सारे एडजेसेंट में कौन बचा? सिर्फ C. C. समझा? D और E देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि विजिटेड है. C के सारे एडजेसेंट खत्म करो, कौन आएगा? G. G के सारे खत्म करो, F. अब ब्रेथ फर्स्ट का मतलब एक लेवल पकड़ो, उसके सारे एक वर्टेक्स पकड़ो, उसके सारे एडजेसेंट खत्म करो.
फिर कोई एक वर्टेक्स पकड़ो, उसके सारे एडजेसेंट खत्म करो, उसको बोलते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट. यू आर फिनिशिंग ऑल एडजेसेंट ऑफ अ नोड फर्स्ट एंड देन गोइंग फॉर अदर वर्टेक्स. समझा? यस सर. लेकिन डेप्थ क्या बोलता है? नहीं नहीं, सारे नहीं, किसी एक को. जैसे ए का कौन बाजू वाला है? डी. डी का कौन? ई. ई का कौन? एफ. एफ का कौन? जी. ऐसा ब्रेथ बोलते नहीं, ए के सारे बाजू वाले को खत्म करो तो ए के बाद डी ई बी ही आएगा. यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन इट. सेलेक्ट एनी वन एडजेसेंट वर्टेक्स एंड विजिट इट एंड रिपीट इट. और ब्रेथ क्या बोलते हैं? नहीं, सेलेक्ट ऑल द एडजेसेंट वर्टेक्स. एनी वन और ऑल में फर्क है ना बेटा? यस. आई होप यू गॉट इट. यस सर. Can we see your program? Yes. No. First, before we go to the program, let me first talk about a function. Function for DFS traversal. पहले मैं फंक्शन पढ़ाना चाहूंगा, प्रोग्राम तो क्या मिल ही जाएगा. आई एम कॉलिंग अ फंक्शन DFS. आई एम पासिंग एनी नोड टू इट, एनी नोड. ठीक है. इंट आई. हमने याद है डेफ फर्स्ट में हमने क्या बोला? सबसे पहले जो नोड आएगा उसको विजिटेड बोल दो. तो विजिटेड ऑफ नोड को बोलो 1. क्लियर है? क्योंकि इनिशियली तो 0 है ना बेटा. आर यू गेटिंग इट? यस सर. जैसे ही विजिट किया मैंने बोला आउटपुट में प्रिंट कर दो. तो प्रिंट एफ कर दो %d/t. जो भी नोड आया है उसको प्रिंट कर दो. प्रिंट करने के बाद फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i मतलब फॉर ऑल अदर वर्टेक्स. व्हेन आई से दिस इट मींस फॉर ऑल other vertex. If, या मैंने क्या बोला? adjacent होना चाहिए और unvisited होना चाहिए. yes और no? यस सर. किसका adjacent? नोड का. ये जो मैंने नोड पास किया है ना बेटा, इसका adjacent. तो कैसे पता चलेगा? we will have adjacency matrix ADJ. अगर ADG में नोड और I इक्वल टू 1 है, नोड और I इक्वल टू 1 है, मींस देयर इज एज बिटवीन नोड एंड I वर्टेक्स. तभी तो 1 रहेगा बेटा, नहीं तो 0 रहेगा. हमने बात की है. इसका मतलब नोड एंड I आर एडजेसेंट एंड ith वर्टेक्स is not visited. मतलब visited of I 0 है, means ith vertex not visited. देखो not visited मतलब unvisited और adjacent होना चाहिए. मतलब अगर I मतलब see we will check for all other vertex ना बेटा. देखो ऐसा है, जैसे मैं तुमको ट्रेस करूंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं. and then I will call DFS of I. This is my for loop and this is my function. Can I start tracing it? Can I start tracing it? Yes. Now please be with me. Please be with me. It will take hell lot of time and you definitely will get confused. Please. A, B, C, D, E, F, N, G. तुम पहली बार रिकर्शन की पराकाष्ठा देखोगे. यही था ना बेटा अपना ग्राफ. इसका एडजेंसी मैट्रिक्स में समझ रहे हो ना? Yes, मेरे को sir. बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6x6 का मैट्रिक्स आएगा यार, 7x7 का. It will be huge, but I hope you can visualize what I mean to say. I mean, if you want, I can make it. कोई प्रॉब्लम नहीं.
ए बी सी डी ई एफ जी। ये जो ग्राफ हमको ऐसे दिख रहा है, मशीन को ऐसे दिखेगा। दिस इज माय एडीजे मैट्रिक्स। जी, चलो ए से कहाँ कहाँ, ए से बी ई डी, बाकी सब जीरो। बी से कहाँ कहाँ, ए ई सी, बाकी सब जीरो। बराबर ना बेटा, मिस्टेक होगा तो बताना। सी से कहाँ, ई बी जी, सी से ई बी एन जी, बाकी सब जीरो। डी से ए एन ई, बाकी सब जीरो। ई से कहाँ, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ। एफ से कहाँ, ई और जी, एफ से ई और जी। जी से कहाँ, सी एफ। I hope now you got how the adjacency matrix will look like. कोई confusion? No, sir. चलो, let me start by calling note for above graph. And we will also have a matrix, an array visited. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This array is visited. A, B, C, D, E, F, G, initialized with 0. Clear? Now, असली काम अब शुरू हो रहा है भाई, शुरू करूं? Yes? तो ये अनविजिटेड होना चाहिए ना बेटा, अभी मैट्रिक्स का नाम विजिटेड है, सॉरी एरे का नाम विजिटेड है बेटा। अच्छा, ये जो मैंने 1 to n लिखा था तो ए बी सी डी नहीं रहेगा। ओके और गलती हो गया है, बिकॉज ए बी सी डी एरे में इंडेक्स में नहीं जमेगा ना, तो लेट अस असाइन डिफरेंट नेम। समझ में आ रहा है? Let us assign 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. One, 3, 4, 5, 6, 7. So यहाँ क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Got it? Now can we start? Everyone here. सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ DFS1. Let us start from vertex 1. Everyone, are you there? So मैंने कॉल किया DFS1. DFS1 में what is node का value 1? Yes or no? Yes, Just sir. एक पहले ये बता, यहां तक समझा क्या? आपको ये ग्राफ दिया ABCD की जगह अभी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया, बाकी सब सेम है। मैंने एडजेंसी मैट्रिक्स बना दिया डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ एंड वी हैव एन array visited. Come on, tell me if there is any confusion. Is there any confusion, beta? Yes or no? No, sir. Okay. Now listen. Just be with me. Just be with me. मैंने कॉल किया DFS1, तो DFS node is 1. Visited of 1 को बोलो 1. पहला काम क्या होगा? Visited of 1 को बोलो 1. यहाँ पे visited of 1 को 1 बोल दिया। Yes or no? अब उसके बाद आप देखो I 1 से n तक पॉसिबल है ना बेटा?
सो नाउ देखो डी आई इक्वल नोड, ये नोड है, नोड इक्वल टू 1, व्हाट इज पॉसिबल, I1 I2, ये पॉसिबल कॉल होगा ना, यस सर, I3 यस। I4 I5 I6 एंड I7, ये पॉसिबल कॉल होगा। तो पहले I क्या होगा, 1, समझा। नाउ नोड इज 1, नोड इज 1, I इज 1, 1 से 1 एज है क्या, एडजेंसी मैट्रिक्स में 1 1 1 है क्या, एडजेंसी मैट्रिक्स में 1 1 0 है ना, इसका मतलब 1 से 1 एज नहीं है, तो वी विल नॉट कंसिडर 1। नहीं समझा। सी फॉर लूप देखो, I goes from 1 to n, so we have to check it for all possible value of I. So first I is 1, node is 1. Is there is an edge from 1 to 1? No. So if condition is false, we will go for next value of I. Can you visualize it? Hello? सर वो इफ वाला स्टेटमेंट फिर से बताइए ना। क्या बोलता है, अगर नोड वर्टेक्स और आई वर्टेक्स के बीच में एज है, कैसे पता चलेगा एज है, एडजेंसी मैट्रिक्स में नोड और आई 1 है, देखो ना बेटा 1 और 2 1 है, मींस देयर इज एन एज फ्रॉम 1 to 2, 1 और 4 1 है, मींस देयर इज एन एज फ्रॉम 1 to 4, 1 and 5 1 है, मींस देयर इज एन एज फ्रॉम 1 to 5, 1 और 6 0 है, मींस देयर इज नो एज फ्रॉम 1 to 6। चेक कर लो ऊपर। तो दिक्कत क्या है, what we want adjacent and unvisited, correct? adjacent of node, नोड का एडजेसेंट कौन होगा, नोड के साथ जिसका वैल्यू 1 होगा वो नोड का एडजेसेंट होगा, और वो अनविजिटेड होना चाहिए, यानी विजिटेड में वो 0 होना चाहिए। अगर विजिटेड एरे में 0 है तो वो अनविजिटेड है बेटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस सर, अभी समझा। So now please be with me. Node is 1, I is 1. You tell me, is there is an edge from 1 to 1? No, we will not consider. Now I is 2. Is there is an edge from 1 to 2? 1 2 is 1. And is 2 visited? No. यानी if condition true हो गया। देखो what is node 1, what is node 1, what is I 2, I is 2 ना, एडजेंसी मैट्रिक्स में 1 2 1 है क्या, 1 2 1 है, यस। विजिटेड ऑफ I, व्हाट इज I 2, विजिटेड ऑफ 2 0 है क्या, विजिटेड ऑफ 2 0 है, यानी इट इज एडजेसेंट, it simply means I is adjacent to node and I is unvisited। समझा? यस सर। सी तो 1 2 चलेगा, 1 2 चलेगा, तो व्हाट इज नाउ, तो देखो नाउ वी विल कॉल डीएफएस ऑफ आई, सो नाउ वी विल कॉल डीएफएस ऑफ 2, बिकॉज आई इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। नहीं समझा? समझा सर। अब ये ना तुमको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू विल एक्चुअली लर्न रिकर्शन नाउ, ट्रस्ट मी। तो देखो I equal to 2 के लिए we call DFS 2. So now what is node? Node is 2. Visited, visited of 2 को बोलो 1 and print 1 ना, and print 2. So we got answer as output में क्या आएगा, 1 2 आंसर आ चुका है। देखो ना, विजिटेड ऑफ नोड को बोलो 1 और उस नोड को प्रिंट कर दो। नहीं समझा? समझा सर, समझा। आई एम गोइंग वेरी स्लो ऑन दिस। नाउ आई का पॉसिबल वैल्यू क्या है, 7। इट इज रिकर्शन ना बेटा।
नाउ नोड इज 2, 2 1 चलेगा नहीं चलेगा बिकॉज 1 इज विजिटेड, 2 2 चलेगा नहीं चलेगा बिकॉज 2 इज विजिटेड। नहीं समझा? समझा। क्योंकि 1 और 2 तो 1 हो चुका है ना बेटा विजिटेड में। अब देखो 2 3, 2 3 चलेगा। अब इधर देखो, उधर देखो ही मत। 2 और 3 के बीच में एज है, हाँ। 3 विजिटेड है नहीं, तो इट इज लीगल। सो यहां से कंट्रोल आगे जाएगा। वी विल कॉल डीएफएस 3। सो व्हाट इज नोड? नोड इज 3, विजिटेड ऑफ 3 को बोलो 1 एंड प्रिंट 3। अब यहां से I is 1, I is 2, I is 3, I is 4, I is... समझ रहे हैं ना बेटा? सर समझ रहे हैं। ना 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 3 3 भी नहीं चलेगा क्योंकि तीनों विजिटेड हो चुके हैं। यस सर। See, 3 भी विजिटेड हो चुका है, तो visited of I will be 0 no longer because they are 1 now. Now I is 4, 3 4, 3 4 एज है क्या? नहीं है ना। देखो 3 और 4 के बीच में एज नहीं है ना, तो 3 4 इज 0 ना। देखो यस सर। एज नहीं है तो 3 4 भी नहीं चलेगा। 3 5, 3 5 के बीच में एज है क्या? बोलो, तुम बोलते रहो। 3 5 के बीच में 5 विजिटेड है क्या? नहीं, तो ये चलेगा। सो नाउ DFS 5. So what is node 5? Visited of 5 को बोलो 1, print 5. Visited of 5 को बोला 1, print 5. समझ रहा है बेटा? यस सर। अब अगेन यहाँ से I is 1, I भाई सब नोड पे जाके ऑप्शन तो फॉर लूप तो 1 से नहीं जा रहा है ना। एक बात नोटिस करना, अभी नोड इक्वल टू 3 के लिए 6 और 7 का एग्जीक्यूशन बाकी है। नोड इक्वल टू 2 के लिए 4 5 6 7 बाकी है। नोड इक्वल टू 1 के लिए 3 4 5 6 7 बाकी है। रिकर्शन है, पीछे आके वो एग्जीक्यूट करना है। अरे समझ रहा है? लेकिन सर ये तो डीएफएस है ना। डीएफएस है, मैं डीएफएस लिख रहा हूं प्रभु। हाँ, तो हम लोग एक नोड को एक ही बार विजिट करते हैं। करेक्ट ना बेटा, लेकिन फॉर लूप उतनी बार चलेगा, पीछे आएगा, चेक करेगा, अनविजिटेड है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट कंडीशन तो चेक करेगा। आई विल आइट बेटा, फॉर लूप है तो आई हैव्स टू आइटरेट फ्रॉम 1 to n. यस सर। ओनली थिंग इज दैट विल नॉट बी कंसिडरेशन बट इट विल बी चेक ना बेटा। वो कंडीशन चेक तो करेगा ना, विजिटेड ऑफ आई 0 81। अब देखिए ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 5 4, 5 4 है क्या? हाँ। 4 विजिटेड है नहीं, समझ रहा है? यस सर। DFS 4, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नोट 4 हो गया, विजिटेड ऑफ 4 को बोलो 1, प्रिंट 4, विजिटेड ऑफ 4 को बोला 1, प्रिंट 4। अब अगेन इसका भी बेटा फॉर, देखिए ना हर फंक्शन कॉल में फॉर लूप 1 से n जा ही रहा है ना बेटा। यस सर। This is actually real recursion. चलो देखते हैं। I 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा बिकॉज सब विजिटेड है। देखो 1 से 5 तक देखो कंडीशन, देखो फॉर लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगा, खाली वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज फॉल्स ना, सो 6 7 ही बाकी है। 4 6 4 7, 4 6 है क्या? नहीं। 4 7 है क्या? नहीं, यानी ये दोनों खत्म। यस सर। Now condition will come back where? Here. समझा? यहां से it has left ना,
फॉर नोड इक्वल टू 5 आई इक्वल टू 4 उसने आगे कॉल किया, वो कॉल बंद हो गया, तब वो पीछे आएगा। एंड नाउ नोड इज व्हाट 5, नोड इज 5 एंड आई इज 5, चलेगा नहीं। नोड इज 5 आई इज 6, चेक करो 5 6 चलेगा? यस, बिकॉज 6 इज अनविजिटेड, नोड इज 5, चलेगा। यहां से कॉल होगा, क्या कॉल होगा? DFS 6, so node is 6, instead of 6 को बोलो 1, print 6, instead of 6 को बोला 1, print 6। now यहाँ को भी node equal to 6 के लिए I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 1 चलेगा, 2 चलेगा नहीं, सब विजिटेड है, कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ 7 चेक करेंगे क्योंकि 7 इज अनविजिटेड। सो नोड 6 आई इज 7, 6 7 6 7 एज है, हाँ 7 विजिटेड है नहीं, विजिट करो। सो यहां से एक और फंक्शन कॉल होगा DFS 7, सो नोड इज 7, instead of 7 को बोलो 1 and print 7, instead of 7 को बोला 1, print 7। अब again I is 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा फॉल्स होगा बेटा क्योंकि सब विजिट हो चुके। अच्छा फॉल्स हो गया मतलब DFS 7 खत्म हो गया। यस सर। 7 खत्म हो गया मतलब ये 5 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया तो कंट्रोल अब इधर आएगा, 6 चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, चलेगा। यानी कंट्रोल यहाँ से यहाँ आएगा और कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, चलेगा नहीं क्योंकि सब विजिट हो चुके हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ रहा है? एंड फाइनली योर स्टैक इज एम्प्टी। आई होप यू मे अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड and see your answer. See your answer. 1 2 3 5 4 6 7, 1 2 3 5 4 6 7, ये है ना A B C E D F G, करेक्ट? हेलो, समझ रहा? तुमको ये रिकर्शन समझा क्या बेटा? ये पूरा ट्रेस किया मैंने, आई हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम टू इट and this is actually what happens behind the scene। ये इतना बड़ा कॉल होगा पूरा। I want you to write this. Is it okay? Yes sir। Please write. See, it is very beautiful concept. You may have to revisit it again, कोई problem नहीं।
समझ रहे हैं ना बेटा? यस सर। वो ट्रेस करना ना बहुत जरूरी है। सी, आपने एक बात नोटिस किया होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्टेप्स लिख रहे थे पुश करो पॉप करो ना, दिक्कत ये है कि इफ आई एम यूजिंग रिकर्शन आई एम नॉट, देयर इज नो नीड फॉर मी टू क्रिएट स्टैक ऑफ माय ओन. The moment I use recursion, my system will create stack and the operation will be done accordingly. Correct? Just let me know when to scroll, beta. सर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ बेटा.
कॉल ट्रेस करने की जरूरत नहीं ना कि तुमको वो भी लिखना है बेटा। Done, sir. You don't have to write this, I guess, because I mean you can understand what's is correct. आपको ट्रेस करने का है क्या बेटा? यू कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम. हेलो, कैन आई गो ahead with the program now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I will write the program क्योंकि ये क्या important है, तो I will write it. We will write the complete program. So C program to implement depth first search for given graph hash include बेटा हमें एक एरे बनाना है, 2D एरे. तो लेट मी क्रिएट int adj. लेट मी क्रिएट 10 10 10 10 मीन्स मैंने 10 10 का बनाया. इट मीन्स देयर कैन बी मैक्सिमम 10 वर्टेक्स. एंड let me 10. create, yes, let me create an array visited of size 10 maximum, and again let me initialize to 0. ये तो ग्लोबल है. ग्लोबल मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो हम किसी भी फंक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं. Then I am calling dfs function int node. जैसे मैंने कहा, जैसे ही कॉल होगा I बनेगा विजिटेड. ये जो विजिटेड आ रहे हमने बनाया 0 से इनिशियलाइज करके, उसमें हम नोड को वैल्यू देंगे 1. printf %d/t नोड का वैल्यू प्रिंट करेंगे और फॉर लूप जो हमने अभी लिखा है, और i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस. क्या करेंगे? कंडीशन, अगर एडजेंसी मैट्रिक्स में नोड और वर्टेक्स i 1 है, इसका मतलब नोड एंड i आर एडजेसेंट एंड i विजिटेड भी नहीं है, यानी विजिटेड ऑफ i इज 0. अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो हम dfs फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करेंगे i के लिए. ये मेरा फॉर लूप बंद, ये मेरा फंक्शन बंद. अब यहाँ मेन चालू करेंगे. यू गॉट इट? Yes, sir. Now let us see main. int main ना याद है हमने रीड ग्राफ करके एक फंक्शन बनाया था. आप वो फंक्शन भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. अगर नहीं करना है तो हम मेन पूरा प्रोग्राम लिखते हैं. let e be number, we have to read a graph. let e be number of edges, v be vertices, v1 v2, ठीक है. एंड नोड विल बी द स्टार्टिंग नोड. मैं यूजर को सबसे पहले बोलूंगा प्रिंट एंटर नंबर ऑफ वर्टेक्स, स्कैन एफ
percent d ampersand v printf enter number of edges scanf percent d ampersand e. We got number of edges. Now याद है मैंने कहा था enter detail of every edge. printf वो edge कौन कौन से दो वर्टेक्स के बीच में है. enter details of every edge. Now since I say every edge, the for loop will execute e number of times. For e number of time मैं बोलूंगा printf enter the vertex info for edge. उस edge के vertex कौन कौन है. तो scanf हम बोलेंगे दो भाई अगर कोई भी edge है दो vertex चाहिए, एक का नाम v1 एक का नाम v2 देते हैं और adj v1 v2 equal to adj v2 v1 equals to 1 कर देंगे. समझा क्या ये पूरा हमने ऑलरेडी क्रिएट ग्राफ किया हुआ है. तो I have read number of vertex, I have read number of edges, करेक्ट. फिर मैंने बोला भाई e edges है तो हर edge कौन कौन से दो वर्टेक्स के बीच में है वो भी बता दो. यूजर ने v1 v2 बता दिया कि ये edge, तो एडजेंसी मैट्रिक्स में v1 v2 और v2 v1 के बीच में 1 लिख देंगे बिकॉज अनडायरेक्टेड है ना बेटा. यस सर. नाउ अब देखो अब printf एंटर भाई कहां से स्टार्ट करें. वी हैव एंटर्ड द ग्राफ. एंटर स्टार्ट वर्टेक्स. स्टार्ट वर्टेक्स कहां से चालू करें. दैट विल बी नोड का वैल्यू. I am going to call DFS and passing node to it. समझा. नोड माइनस एक्चुअली आई शुड राइट नोड -1. क्यों नोड -1 बेटा समझो जरा. रीजन ये है then return 0 and main. ये main है. Now node -1 क्योंकि अगर वर्टेक्स 2 है 2 मतलब 1 ना. 0 1 2 इंडेक्स है ना बेटा. यस सर. और अब फॉर लूप देखिए मैं 1 से चालू कर रहा हूं. आई एम नॉट यूजिंग 0. 0 will be unused position here. 0 रो 0 कॉलम में 0 एंट्री रहेगा and I'm not using it. So listen, so I have to make one more change. If I have to make one more change and the change is, in the changes it should not be v1 v2, it should be v1 -1 v2 -1 ना. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बताता रहूंगा. सी लिसन हियर. हमारा जो पिछला एग्जांपल देखो. एक्चुअली ये एरे में 0 0 से चालू होगा ना बेटा. तो जिसको मैं 3 बोलना चाहता हूँ एक्चुअली 0 1 2 होगा ना. हाँ. तो इसलिए मैं v1 -1 कर रहा हूँ. समझ में आया क्या. लेकिन फिर सर हम लोग इधर वो फॉर लूप में 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे. एक मिनट. हम फॉर लूप 1 से ही चालू कर देना. 1 to e ना. तो देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. परफेक्ट 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 करेक्ट बेटा. लेट अस मैंने 1 से ही चालू किया ना. माय फॉर लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओनली ना. 1 to e ना. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट नो प्रॉब्लम.
V1, V2, V2, V1 and then node only. हम जीरो यूज ही नहीं करते, हम फॉर लूप में भी कहीं भी जीरो यूज नहीं किए ना। समझा क्या चल रहा है? सी डोंट वरी, आइए बेटा, हमने ये 2D एरे बनाया ना, 10 10 10 10 मतलब मैक्सिमम 9 वर्टेक्स इज अलाउड हियर बिकॉज दैट इंडेक्स 0। सी व्हेन आई से 10, ट्राई टू अंडरस्टैंड ADJ 10 10, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम ये जीरो रो और जीरो कॉलम तो मेरे को यूज ही नहीं करना है, तो मैक्सिमम ये इतना एरिया मैं यूज कर सकता हूँ। Yes, sir. So if I created array of size 10 10, so maximum I can go for 9 vertex in that graph. I hope you can understand what I'm trying to say. नहीं समझा? हाँ समझा ना बेटा कि कोई, हाँ बोलो। अगर हम लोग वो वर्टेक्स को 0th वर्टेक्स बोल के चालू करते तो हम लोग ये जीरो को भी यूज। लेकिन बेटा वो फॉर लूप में दिक्कत हो जाती है, फॉर लूप आइटरेटर है ना बेटा, डोंट गो इनटू इट, इट विल मेक योर प्रोग्राम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। So this is easiest way of writing it. I will use the position 1 to n minus 1 only. समझा? और 1 to, जैसे मैंने कहा suppose I wanted 7 vertex here, तो 1 to 7 is there ना? So if I'm writing this, it means that maximum 9 vertex is allowed. I hope you got it. समझा कि नहीं समझा? फॉर लूप में कहीं भी देखो मैंने जीरो यूज ही नहीं किया है, 1 to E 1 to N, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। समझा क्या? यस सर, समझा। यू वांट टू राइट दिस प्रोग्राम? यस सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एग्जाम में दो में से एक आएगा, एंड आई हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम टू इट। प्लीज राइट दिस प्रोग्राम। आपने ऑलरेडी ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, अगर फंक्शन फिर से नहीं लिखना है तो जस्ट फंक्शन का नाम लिख के डैश डैश करके छोड़ दो, राइट मेन। गॉट इट? प्लीज राइट दिस। ये आपका प्रैक्टिकल लिस्ट में भी आएगा ना बेटा।
हो गया बेटा? नहीं sir. Sir, Yes बेटा. हो गया बेटा? और लेट मी नो बेटा अगर हो गया तो. हाँ सर हो गया. So this was about depth first search. जैसे हमने कहा, we are not completing every adjacent node. What we are doing is, first we are going for first adjacent, and then similarly we are working on it. So, and it, like the way I said, it uses which data structure? It uses stack data structure. Now can we go for breadth first search?
Let us go for breadth first search. Now what happens in breadth first search, जैसे मैंने कहा कि we will visit a node and then we will visit all its adjacent node and then we will move to next search. हमने कहा we will visit a node. Now चाहे वो depth first search हो चाहे वो breadth first search हो, it will present you a spanning tree only. So let us write some steps and then we will come back to theory. Steps in breadth first search, please concentrate. पहला, we will define a queue data structure with size equal to number of vertex in graph. Stack size equal to number of vertex, queue size equal to number of vertex. Select any vertex as start point. कोई भी एक वर्टेक्स को आप स्टार्टिंग पॉइंट समझ लो. विजिट इट, उस वर्टेक्स को विजिट करो एंड वहां स्टैक में पुश करते हैं, यहां हम क्यू में इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट दिस वर्टेक्स इन क्यू. नेक्स्ट, अब देखो, विजिट ऑल unvisited adjacent, visit all unvisited adjacent vertex of the vertex at Q front. ठीक है. Next, when there is no new vertex to be visited, for Q front vertex, जो वहां पे स्टैक टॉप देखते हैं, यहाँ Q front देखेंगे. For Q front vertex, then delete the vertex. Repeat step 3 and 4 until the queue is empty. Produces final spanning tree by removing unused edges from the graph. Let's see how it works. Example, वही ग्राफ लेते हैं, A, B, C, D, E, F and G. देखिए, let us have a queue data, let us have a visited array. Initialize it to 0 because right now none of them are visited. And let us have a queue data structure. This is the front of the queue and this is the rear of the queue.
start with vertex A. Let us start with vertex A. Everyone please be with me. Step 1 क्या बोलता है? Define a Q data structure with size equal to number of vertex. Agreed. कोई भी vertex को as a starting point ले लो, उसको visit करो and insert the vertex in a queue. So start with vertex A. Visit of A को बोलो 1. ठीक है. Push A in queue. तो A में क्यू में A आ गया. Agreed? Yes, Now sir. क्यू फ्रंट पे कौन है? A. बराबर. C. Visit all unvisited adjacent vertex of the vertex at Q front. Now Q front पे now first, second. At Q front we have vertex A. Now insert all any नहीं बोल रहा, all वहां पे क्या हम बोलते थे डेप्थ फर्स्ट सर्च में? anyone. Insert all unvisited adjacent vertex of A in Q and mark them visited. Okay, so A का unvisited adjacent कौन है? और A unvisited adjacent nodes are, A का unvisited adjacent कौन है बेटा? BDE. BDE. तो visited of B को बोलो 1, of D को बोलो 1, visited of E को बोलो 1 and insert BDE in Q. तो एक BDE Q में आ गया, सबको विजिटेड बोल दिया. नहीं समझा? समझा सर. अब नाउ टेल मी. अब जब हम ऐसा करते हैं, ए को डिलीट करेंगे. ठीक है. अब क्यू फ्रंट पे ए है. क्यू फ्रंट पे ए है ना. देखो, when there is no new vertex to be visited for Q front, delete the vertex. We will see always Q front. Q front पे अब कौन है? A. A का कोई भी unvisited adjacent बाकी है? नहीं. जितने भी थे मैंने पुश कर इंसर्ट कर दिया. Yes, sir. No new unvisited adjacent of A remains. So delete A. A को मैंने डिलीट कर दिया. A को डिलीट किया. अब क्यू फ्रंट पे कौन है? B. Are you getting it? Yes, sir. 4. Now at Q front we have B. Now B का unvisited adjacent insert करो. Now insert all unvisited adjacent vertex of B and mark them visited. B का कौन कौन है? E ऑलरेडी है तो सिर्फ C बचा. Yes, sir. और visited of C को बोलो 1 and insert C in Q. C and E, C को बोला 1. समझ गया? अब Q फ्रंट पे B है. B का कोई अनविजिटेड एडजेसेंट बचा है? नहीं. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. नाउ डिलीट B.
अब क्यू फ्रंट पे कौन बचा? डी। समझ रहा है? यस सर। नाउ एट क्यू फ्रंट डी। डी का कोई अनविजिटेड एडजेसेंट है क्या? नहीं। हाँ, नो अनविजिटेड adjacent of D, डिलीट D बराबर। अब क्यू फ्रंट पे कौन है? E। नाउ E एट क्यू फ्रंट। E का अनविजिटेड एडजेसेंट कौन है? F ओनली। यस। Yes. Insert F as unvisited adjacent of E and mark it visited. So अब आया F and mark F at visited. Got it? यस सर। Now next. Now delete E ना, यस। बचा F. Sorry, C. Now at Q front C. C का unvisited adjacent कौन है? G. जी। Insert G as unvisited adjacent of C and mark it visited. तो इधर आ गया G and G is marked visited. अब तो कुछ ही नहीं बचा। Now delete C, delete F and delete G. समझा? यस सर। का ना आउटपुट देखो, डिलीट का ऑर्डर देखो। आउटपुट इज C ऑर्डर ऑफ डिलीट। पहला कौन डिलीट हुआ बताओ? ए। बी। ए के बाद बी। बी के बाद डी। डी के बाद ई। सी एफ जी। ए बी डी ए बी डी ई सी एफ जी। देखो ए के बाद बी डी ई आया बेटा। ए के बाद बी डी ई मतलब क्या? ए के बाद सारे एडजेसेंट आए उसके, दैट ब्रेथ फर्स्ट। नहीं समझा? समझा सर। Hence, after A, we visited B, D, E. That is all adjacent vertex of A. Hence, it is what? Hence, it is breadth first order. I hope everyone understood this. यस सर। कोई दिक्कत बेटा? Yes. Hello. So you want to write this or directly I can go for program? You understood this, na? Can I go for program? सर ये लिखना है। ओके बेटा, बिल्कुल लिखो ना, स्टेप्स के साथ लिखो, प्लीज राइट। अपने को कोई घाई नहीं है, बहुत टाइम है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ग्राफ। फिर नेक्स्ट वीक तुमको दिवाली का छुट्टी है कि नहीं पता नहीं, अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट अपना लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे तो छुट्टी है, दैट इज फॉर श्योर।
मंडे ट्यूसडे अगर तुमको छुट्टी नहीं दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वी विल फिनिश सर्चिंग ऑल्सो। तो दिवाली वीक में अपना सर्चिंग हो जाएगा। नहीं हुआ तो अगर छुट्टी हुआ तो उसके नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। नीड नॉट टू वरी, वी हैव एम्पल टाइम। प्लीज फिनिश दिस फास्ट। सर स्क्रॉल कीजिए ना।
से स्क्रॉल कीजिए ना. Is it done? Done, sir. Okay. So this is the ये भी लिखा आपने बेटा? You should check the order of deleted. नहीं सर, ये नहीं लिखा. हाँ.
Done, sir. Okay. Can we start with the program of breadth first search so that we will finish this chapter? It only needs program. Amita? Yes, sir. खाली program बाकी है तो I'm not taking. It will not take much time of yours. No. Yeah. So we need to have a Q data structure here, correct? But हम Q वैसा क्यों नहीं बनाएंगे जैसा हमने वहाँ बनाया था? So let us see now. Let us see. We will finish the program and then we will end our session. C program to implement. So then it will finish our chapter. Breadth first search for given graph. ठीक है, जैसे कि हमने कहा as include stdio.h, हमको तो एडजेंसी एरे बनाना ही पड़ेगा. int adj 10 10 initialized to 0, int visited 10 initialized to 0. And now we need to see our function void bfs. bfs को मैं एक नोट दूंगा. Don't worry, we will trace it. Absolutely no problem. मैं bfs को एक नोट दूंगा. now बेटा देखो मैं एक क्यू बना रहा हूँ. I am using array as a queue. Let me have a queue of size 20. Actually 10 दिया तो भी चलेगा because इसका size क्या होना चाहिए? Maximum number of element in the number of vertex ना. हमने क्या बोला? क्यू का साइज वर्टेक्स होना चाहिए. तो 10 भी दिया तो भी चलेगा. लेट एफ बी द फ्रंट. इनिशियली फ्रंट -1 होता है, आर बी -1 होता है, आई एन नोड, एन डी इज अ नोड. आप बोलोगे सर वो क्यू स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? बेटा यहाँ जरूरत नहीं है ना. वी जस्ट सी, हमारा उद्देश्य क्या है? वी जस्ट वांट टू मेक एन एरे बिहेव लाइक अ क्यू. दैट्स इट ना. सो लेट दिस बी द एरे, लेट दिस बी फ्रंट. बेटा किसमें? जब हम क्यू front sorry, front is 0, rear is -1 because rear ++ होगा. करेक्ट. नाउ जैसे सबसे पहले नोड आया, हम विजिटेड ऑफ नोड को क्या बोलेंगे? विजिटेड बोल देंगे. विजिटेड ऑफ नोड को बोलेंगे 1. और क्यू में पहले प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं. जैसे रेयर ++ करते हैं, बाद में इंक्रीमेंटेड रेयर पोजीशन पे एलिमेंट रखते हैं ना. तो यहाँ ++r बोला, एक ही बात हो गया ना बेटा. तो रेयर पोजीशन पे नोड को रख दो. तो नोड तो जो पहला एलिमेंट गया, रेयर पहला -1 है, वो 0 पोजीशन पे चला गया. यस और नो? यस सर. नो. और तब तक करने का जब तक फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर. अब देखो ना यहाँ पे इस कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ -1 दिया. वेट ना, जस्ट हैव अ लुक. हमने वहां पे बेटा -1 किया था बिकॉज देयर वाज द क्यू वाज एज एन इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर जिसपे हम इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन कर रहे थे. करेक्ट. यहाँ पे देखो मैंने जस्ट इमेजिन करो हमारा ग्राफ. ये इसको 1 2 3 नाम देता हूं मैं. One, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. मैंने सबसे पहले बोला BFS 1. ये मेरा क्यू है. ध्यान देना, क्यू में मैक्सिमम 7 एलिमेंट चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. तो और ये रहा मेरा विजिटेड. ये विजिटेड और ये मेरा क्यू. मैंने बोला अभी मैंने दोनों को
क्यू में फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, 0 to 6 it is not representing vertex, 0 to 6 करेक्ट। नाउ मैंने बोला फ्रंट और रेयर दोनों -1 बोलो, ऐसा मैंने बोला। सपोज मैंने ऐसा बोला फ्रंट भी -1 रेयर भी -1, ध्यान देना। मैंने BFS 1 को कॉल किया, विजिटर ऑफ 1 को बोला 1, समझ रहा है? अब रेयर पहले प्लस प्लस रेयर करो, रेयर प्लस प्लस किया तो क्या होता है, रेयर बिकम 1, सॉरी रेयर बिकम 0, 0 पे नोट रख दो, 0 पे 1 रख दिया। अब ये जो मेरा कंडीशन है ना, फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर, अगर मैंने फ्रंट को पहले 0 बोल देता तो यहाँ पे फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर ना बेटा। I want to avoid that condition, just see what I'm doing। मैंने दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, that's my way of interpreting it। मैंने कहा जब तक फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर डिलीट करो, डिलीट करेंगे कहां से, क्यू में प्लस प्लस फ्रंट, याद है वहां हम क्या बोलते थे, जो भी फ्रंट पे है वो एक्स को दे दो, यहां हम प्लस प्लस फ्रंट कर रहे हैं, एक ही बात हो गया ना, इट इज वन एंड द सेम, यस और नो? प्लस प्लस एफ फिर से बताइए ना बेटा। मैंने वहां हम क्या करते थे, एफ को 0 रखते थे और जो फ्रंट पे था वो हम डिलीट करते थे, करेक्ट? यस। यहाँ हम फ्रंट को -1 ही रखते हैं और फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं डिलीट करते से पहले। तो देखो फ्रंट इज -1, फ्रंट प्लस प्लस करो तो फ्रंट अब आ गया 0 पर, अब 0 पे जो है वो एनडी को दे दो, एनडी इज द नोट टू बी डिप्रिंटेड, प्रिंट है %d ND, नहीं समझा, नोड 1 प्रिंट हो गया, समझा सर, यस। हाँ, और अब देखो, अब नोड प्रिंट हो गया, मुझे क्या चाहिए, 1 प्रिंट हो गया, आई वॉन्ट टू इंसर्ट ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट ऑफ नोड, यस सर। और i equal to 1, i less than equal to ni plus plus, अगर अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ ND और i अगर 1 है, एंड ये तो समझ गया होगा तुमको, विजिटेड ऑफ i अगर 0 है, अगर 0 है तो क्या करना है, तो उसको विजिटेड बोलो और उसको क्यू में रेयर पोजीशन पे असाइन कर दो, इजी। यस सर। यहाँ पे मेरा फॉर लूप खत्म, वाइल, और ये मेरा वाइल खत्म, ये मेरा BFS खत्म, क्लियर? नाउ मेन सेम ही रहेगा इसके जैसा, सी नीचे प्रिंट कर देता हूँ, देखो मेन में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एजेस, डिटेल सब ले लो, स्टार्टिंग वर्टेक्स ले लो, और जस्ट जहां वहां हमने DFS को कॉल किया, यहाँ किसको कॉल करेंगे, BFS, खत्म। इसको ट्रेस करेगा पूरा, अभी शुड बी ट्रेस इट कंप्लीटली, कि यू अंडरस्टूड इट, so you want to write this or I should attach it in the PDF and will share with you, आप बोलो। We will write this. Okay, write this and I request you to trace this also। ये मैंने जानबूझ के -1 क्यों बोला बेटा, अगर मैंने फ्रंट को 0 बोला ना तो ये मेरा while लूप तुरंत ट्रू हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट इंसर्शन, बिकॉज फ्रंट इज ऑलरेडी 0,
rare after first insertion becomes 0, so this condition will be false ना. Yes sir. इसीलिए हमने दोनों को माइनस बनाया. Please write this. Yes. Please write this, and that will be for all further. So we have completed actually graph data structure. Very nice. And ये तो कुछ एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में बताऊंगा तो कमिंग लेक्चर में. एक तो थ्योरी क्वेश्चन है, and then we will start with searching. Searching will need 1 week. After that we will start tree. That will be real. आप एक बार प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करके देखो. I request you to execute this. Yes. Let me know when to scroll better. लास्ट लेक्चर का नोट्स अपलोड नहीं किया क्या मैंने? I'll see to it is uploaded. Sorry. सर स्क्रॉल कीजिए. Yes. तुमको मेन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. You just write main same as BFS and just instead of same as DFS, instead of calling DFS, call BFS. Yes sir.
Sir, scroll. Yes. Done, sir. Okay. So जैसे मैंने कहा बेटा मेन में remains the same. Just instead of calling depth first search, just call breadth first search. I guess everyone understood this. किसी को कोई confusion? No, sir. No. Okay. So can we call off the session? अपने एक छोटा सा पार्ट रह गया. रुको रुको रुको. या मैंने थियरी के लिए थोड़ा जगह छोड़ा था ना. जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है. मैंने आपके कहा इट विल विजिट ऑल द नोड्स फर्स्ट. करेक्ट. और ये भी बना क्या देता है मुझे. स्पैनिंग ट्री ही बनाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च. इट इज ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक. It visits all the adjacent vertex of node or vertex and then checks for next vertex. Correct now? It uses what? Yes, sir. It uses Q data structure and what is generate. दोनों एक ही चीज जनरेट करते हैं. It generates spanning tree, right? It generates spanning tree for the graph. अब जैसे ये देख लो बेटा, इसका मेरे को स्पैनिंग ट्री कैसे बनता है. देखो सबसे पहले हम ए को गए, ए से बी, बी से फिर बी मतलब वो डी को विजिट करेगा. इससे डी समझ रहे हो. देखो ए बी डी ई, फिर सी, फिर एफ, ई से एफ. क्योंकि ई के वो देखो क्या होता है, ए के बी डी ई सबको विजिट करेगा. ठीक है. सॉरी इट शुड बी लाइक दिस. देन बी के ई के सारे सी एफ एंड देन एफ जी. इट इज अ स्पैनिंग ट्री ना बेटा. Yes, sir. And that is, I mean, जैसे मैंने कहा, generate spanning tree for graph, no unique BFS. That is more than one BFS possible. क्योंकि डिपेंड करते हैं कि आप पहले इंसर्ट क्या करते हो. Yes. For given graph, and there also, here also, no unique DFS more than one DFS possible. समझा. For given graph. Agreed beta? Let me stop recording. Can we call up the session? ठीक है. मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ. ठीक है. This lecture also and last lecture also. Okay. चलो bye. Take care.